Study of motion of fluid without considering the cause of motion. Fluid की velocity, fluid की acceleration. Lagrangian approach. It is a particle concentrated approach. In this approach, the motion of each and every particle is analyzed. Since the number of fluid particles in a fluid system are very high, even for a small volume, this approach consumes a lot much time in the system analysis. The result obtained using this approach are highly accurate. Particle 1, T1, T2, T3, T4, particle 2. Eulerian approach. It is a space-oriented approach. In this approach, we put our concentration on a particular space and all the particles passing from it is analyzed as a bulk simultaneously. Instead of tracking individual particles, we define flow variables as a function of space and time with a controlled volume. In this, pressure field is a function of x, y, z and t. When we define mathematically for a particular field, left side pressure P, right side P plus dP by dx, F is function of R, right side F is function of R plus H, taking a small element dx at x, function of x, and at x plus h, function of x plus h. By Taylor series, f of x plus h is f of x, h by h dash, this is this. By neglecting other terms, we see that mathematically r is a function of x, y, z, t. So dr on differentiating del r by del x dx plus del r by del y dy plus del r by del z dz plus del r by del t dt. Different types of flow in fluid system. Steady flow. If the properties in a flow do not change with respect to time, is known as steady flow. dr by dt s is equals to 0. R is property of fluid flow. Unsteady flow. If the properties in a flow change with respect to time to a fixed space, the flow is known as unsteady. Time variation, space fix. Uniform flow. If the properties in a flow do not change with respect to space at any given time instant of time, the flow is known as uniform flow. dr by del r by del space, यूनिफॉर्म स्पेस वेरिएशन, टाइम फिक्स, इसलिए टाइम ज़ीरो नीचे लिखा है और उसमें स्पेस फिक्स होता है, स्पेस ज़ीरो. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. प्रॉपर्टीज इन अ फ्लो चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द फ्लो इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म. रोटेशनल फ्लो. व्हेन अ फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास while moving in direction of flow, the flow is known as rotational flow. Forced vortex. Irrotational. When a fluid particle do not rotate about its center of mass while moving in direction of flow, the flow is irrotational. Flow over a flat plate. Boundary layer के नीचे rotational और ऊपर irrotational. Vortex flow, rotational and irrotational both. If the density incompressible, so if the density is not changing with respect to pressure, then the flow is incompressible. A flow is said to be laminar when the various fluid particles move in layer with one layer of fluid sliding smoothly over the adjacent. Laminar flow बचपन. Uniform. Space variation to time fix. Turbulent when fluid particle entirely haphazard. Mass flow rate rho a velocity. Discharge a into velocity. Mass flow rate density into discharge. Continuity equation. फ्लो हो रहा है टेकन इन कंट्रोल वॉल्यूम. इन माइनस आउट इज स्टोरेज. लेफ्ट साइड मास फ्लो रेट एक्स, राइट साइड मास फ्लो रेट एक्स प्लस डेल मास फ्लो रेट बाई डी एक्स डेल एक्स डी एक्स. Mass flow rate in minus might flow rate out is equals to mass flow rate stored. Mass flow rate in minus mass flow rate out x plus mass flow rate in minus mass flow rate out y plus mass flow rate in minus mass flow rate out is equals to mass flow rate stored. ठीक है. सो v वेलोसिटी जो होगा वो u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप
Mass flow rate is rho dy by dz du. So when we consider all this x direction में in minus out, mass flow rate x minus mass flow rate x plus del mx upon del x dx. So after cancelling, minus del mass flow rate by del x by dx. मास फ्लो रेट होता है रो डी वाई डी जेड यू एंड डी एक्स. नाउ डी वाई डी जेड डी एक्स इज डी यू डी वी वॉल्यूम. सो माइनस डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स रो वी डेल वी. सो इन वाई डायरेक्शन माइनस डेल बाई डेल वाई रो वी डेल वी एंड जेड में माइनस डेल बाई डेल एक्स रो डब्लू डी वी यू वी डब्लू. Mass flow rate means per second, parallelopiped sides parallel. So from equation 1, del rho by del t plus del x by rho u del by del y rho v plus del by del z rho w is equals to 0. ये एक क्वेश्चन था जिसमें u v w दे रखा था तो और डेंसिटी दे रखी थी, हमें लैम्डा निकालना था. इजी क्वेश्चन है. अब अगर हम बात करें एजम्पशंस की तो 3D स्टेडी फ्लो में डेल रो बाय डेल टी ज़ीरो होता है. सो डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0. फॉर 3D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो डेंसिटी में नो चेंज. सो डेंसिटी बाहर निकाल के 0 कर दिया तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल एक्स वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड 0. फॉर 2D डेल यू और डेल वी होगा. फॉर वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो मास इन माइनस मास आउट एक्स इज मास स्टोर्ड. ये डायग्राम बना हुआ है. सो मास आउट क्या हो गया, मास फ्लो रेट एक्स प्लस डेल एम एक्स प्लस डी एक्स इज डेल रो बाय डेल टी डी वी. सो डेल एम डैश ज़ीरो तो एम कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट तो रो ए वी कॉन्स्टेंट. सो डेंसिटी अगर इक्वल रहा तो ए वन वी वन ए टू वी टू या फिर रो वन ए वन वी वन इज इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टू. डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी. डेल रो बाय डेल टी, डेल रो बाय डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी, डेल रो बाय डेल वाई डी वाई बाई डी टी, डेल रो बाय डेल जेड डी एक्स बाई डी टी, डेल डेंसिटी बाई डी टी बाई डी टी. सो दिस इज़ द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो हमें याद रखना है, एक ये वाला भी.